Hello and welcome students, welcome to GRS Technical. So today we are going to discuss the difference between AC and DC. So in physics class 12th there is a chapter called as alternating current. In that there is a difference between AC and DC. So we are going to discuss the difference between AC and DC in this video. Okay, so I start with it. आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन डिस्कस करने वाले हैं एसी और डीसी के बीच में। एसी और डीसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके फिज़िक्स के चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट में। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जब भी आप डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं आपको बीच में लाइन ड्रॉ कर लेना होता है पेंसिल और स्केल की हेल्प से, और फिर आप डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है। तो एसी और डीसी हम लिख लेंगे। उसके बाद एसी कैन कैरी एंड सेफ टू ट्रांसफर लॉन्गर डिस्टेंस इवन बिटवीन टू सिटीज, दे मेंटेन द इलेक्ट्रिक पावर। ओके, AC can carry and safe to transfer longer distance even between two cities to remain the electric power, whereas DC cannot travel for a very long distance. It loses electric power. Number 2, the rotating magnets cause the change in direction of electric flow, whereas DC directing current, the steady magnetism makes DC flow in single direction. Means in a single direction DC can flow. Get that? Number 3, the frequency of AC is dependent upon country, but generally frequency is 50 Hz to 60 Hz. So always remember, the frequency of AC is dependent upon country, but generally frequency is 50 Hz to 60 Hz. It may come in your exam as a fill in the blanks that what is the frequency of AC. So you have to write 50 Hz to 60 Hz. Okay. Now what is DC? DC has no frequency of zero frequency. ठीक है, DC has no frequency. DC की कोई frequency नहीं होती है और उसका frequency zero होता है, ये भी आपको अपने mind में रखना पड़ेगा. Number 4, in AC the flow of current changes its direction backward periodically. ठीक है, in AC the flow of current changes its direction backward periodically, whereas in DC it flows in single direction steadily. Now number 5. So number 5 is electrons in AC keeps changing its direction backward and forward. Okay, electrons in AC alternating current keeps on changing like direction backward forward, but whereas in DC electrons only move in one direction, that is forward. DC में जो उसका डायरेक्शन होता है वो फॉरवर्ड होता है और AC में वो कीप्स ऑन चेंजिंग होते रहता है, कभी बैकवर्ड रहेगा कभी फॉरवर्ड रहेगा. So students, this was a difference between AC and DC, alternating current and direct current. Hope you all liked it. If you all liked it, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel for further videos. I'm going to upload more informative videos as soon as possible. So please do subscribe our YouTube channel. And thanks for watching this video. Jai Hind, Vande Mataram.